Hello everyone, are we live? Give me a moment, I'll check once. Yeah, fine. So our today's topic of discussion will be linked list, and I hope all of you are doing well in like doing this course, or if you are following the Notion sheet. Today's topic is also quite important, and as it is one of the most fundamental data structures that are used in many uh, problems and to implement other data structures as well and to store data be it in the companies or in apps. So let's see what we'll discuss today. We'll of course discuss about the concept of linked list, about the operations that are involved. Next we'll have three problems today. One will be this reverse linked list, the other is merge two sorted lists, and the third is linked list cycle. So the first one is a reverse linked list, merge to linked lists, and whether a cycle present or not. That would be the third question. Okay, so let's move on and start with the concepts that we have to learn in order to do the problems that arrive next. Okay, so see, linked list is a data structure uh, which primarily uses pointers. Okay, how how do they use pointers is, see, there are things called nodes that we'll use. We'll have pointers that we are going to use, and yeah, that will make what linked list is. Okay, inside nodes we have a particular data that we store in that particular structure, and the pointer to the next variable, or rather the next node. How can we visualize linked list? It can be uh, seen like this. Okay, so what are these? This particularly here is the data. This is the data. Okay, and this here is the address. Address of what? Address of this particular node, right? This is a node. So here it contains the address that points to the next node. Okay, and this node also has its own data or value, you say, and the pointer that points to the next node. Okay, now there are two very different type of nodes that are present here. One is called head or front, you can say, which points to the start of the linked list. This as a whole will be called as a linked list, right? So there is a head pointer which points to a node. Okay, so this pointer points to a particular node which starts the linked list, and hence it's called the head pointer. And then there is a pointer that ends the linked list. It is called the tail pointer, and it particularly points to null. Now, what is null? In pointer, see, if you have a node, this is stored in memory at a particular address, right? Inside memory it contains some address, say 2036. This is the address where this particular node is stored. Okay, so when you assign a pointer say node, and you give the address of this particular list, address of anything, then this will go on and point to 2036. Now node will point to 2036. Okay, and when we write that node ka next points to some other node, let's say at 2040,
So node's next pointer will point to 2040. Okay. Now what does it mean if we say we point to null? So null is no, it's not a specific address. Okay. So this ends here actually. So it doesn't point anywhere, right? So this is a basic concept behind linked list. Now, what are the things we'll use? As I said, we are using head, which points to the start of the linked list, right? Next, we are using the null pointers. And how are we gonna traverse? See, node is or can be defined in a structure, okay, which has the value and this node pointing, or rather a next pointer which points to this particular node. तो अगर ये एक structure है, ये एक node एक structure है, तो ये जो pointer है वो तो एक node को point कर रहा है ना. So we'll again write node pointer because this points to a particular node, right? We can also specify this in a class in C++, or but in C and C++ also we use structures also, right? As now we'll see in lead code, we have struct only that is being used in C++ also. So this is how we'll like basically have nodes. Okay. Now let's see a very interesting usage that linked list provides. You know, whenever in an app or any software you do undo and redo, right? तो वो क्या करता है ना? It's like कि in a say in a text editor you do undo. So there are specific states that is saved in the text editor, right? Whenever you make some changes, it gets saved. So when you undo, this state goes back to the particular state. So call this as one state and this as another state. So what undo will do is it will bring you back to stage one. What redo will do is it will bring you back to stage two. So this is kind of a structure in which linked list can be used whenever we have to undo and redo and stuff. Okay, that is one usage. Now let's move on to the advantages that why are we gonna use linked list and not a like traditional arrays, right? So the advantages of linked list is first of all we have a very quick insertion and deletion, right? क्योंकि अगर हमारे पास एक एरे रहता था ना, एक एरे रहता था, तो whenever we have to insert something here at this particular point, so what we had to do is we need to move this here, this here, this here, this here, and if given there is there is empty spaces left in the array, okay, so we have to move everything. Even if we delete something from here, even say if we delete something from here, then we have to move this back here, move this back here, move this back here. And so we had to, uh, execute some more operations. But given in a linked list, what we can do is for insertion, say there is one point, one node, two node, three node, and there is a fourth node that you want to put somewhere around, say here. Okay, so this points to this at the beginning, this points to this, right? This points to say null, and this is the head. Cool. Now say you want to place this particular node here. So what we can do is we can just remove this pointer and place it here. Okay. And इसका next को हम लोग यहाँ पे डाल देंगे. So now if you look, this is the chain that is formed, right? ऐसा कुछ chain बनता है. Like you are going here, 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 you go here, and then you come here. So if you see, this particular node is already added to the list, right? So it's as simple as that. इसको बाद तुमको इसको कुछ move नहीं करना है. So you are saving some time here, right? And similarly, अगर delete करना है तो you simply remove this particular portion and place it here. So this node gets removed, right? So it's as simple as that. The um, the execution part is a bit more tough, or rather you need to visualize कि किस चीज को किस पॉइंटर को हम लोग कहाँ प्लेस कर रहे हैं. That is what is the game in the linked list, right?
So this is one advantage that we have efficient insertion deletion. The next advantage is that the memory that we allocate in linked list is dynamic, because we can expand or shrink the linked list इन रन टाइम. मतलब जैसे जैसे हम लोग को कुछ चाहिए कि हमें एक इंसर्ट करना है तो हमने एक्सपैंड कर दिया, जब हमें चाहिए कि हटाना है तो हम वहां से हटा सकते हैं और लिंक्ड लिस्ट छोटा होते जाता है. सो दैट इज डायनेमिक मेमोरी, राइट? डायनेमिक मेमोरी. now now the this is not an advantage, but we can write in properties or disadvantage, you can say. The first is there is no direct access. This is a very major disadvantage that linked lists give, you know because inside this particular list, if you directly want to access this particular node, so we don't know the address of this. Let's say if it was 2036, so who tells us that it is 2036, right? So we need to refer to this head and then traverse here, right? In order to get to this, we need head, move here, move here, move here to get to this particular point. And hence we do not have any direct access in a linked list. That is one disadvantage. The second disadvantage can be said ki it's a bit complex because of course we use pointers here. Once you get easy with pointers and understand the concept कि कैसे हम लोग pointer के साथ एक address allocate करते हैं, फिर कैसे हम लोग pointers pass करते हैं in a function, in a parameter, that is for you guys to see in any lecture or any reference, that how do we use pointers. Once you get on with that, I guess these things will be easy. Even moving the pointers and changing the nodes are going to be easy. You just have to visualize things and you can do it. Cool. Are we left to discuss anything inside this? The usage and the execution wala part we will see as we move ahead. Let's quickly discuss some types of linked list. This is quite theoretical, and I expect if you want to search more about it, you can just Google it or read some book, do anything. Just get a bit of the knowledge of this because I am telling you in short, and that will give you a more depth analysis. Even this is quite good and is sufficient, but I would suggest you to learn a bit in depth. This is singly linked list or single linked list. The next is double or doubly linked list, and we have something called circular linked list. What are the differences? यहीं पे देखते हैं. The single or singular linked list is nothing but a normal linked list जहाँ पे हम लोग सिर्फ आगे जा सकते हैं. Like ठीक है, ये सिर्फ आगे की तरफ ही मूव कर पाएंगे. यहाँ पे हेड है और यहाँ पे टेल है, जो भी. ठीक है. So this is what a single linked list is. What a double linked list is, it's quite obvious by the name. We have two pointers in this case. तो जब हम लोग एक वो struct define करते हैं ना, तो we have integer value that sits somewhere on the middle of this particular thing. Then we have a node pointer. One is previous and the other is next. ठीक है. तो इसमें क्या होता है कि this thing points to this, say this thing points to this, and this here points back. सो डबल लिंक लिस्ट का फायदा है कि हम लोग आगे भी जा सकते हैं और साथ के साथ जब पीछे आना हो तो पीछे भी आ सकते हैं. दैट इज डबल लिंक लिस्ट. व्हाट इज सर्कुलर लिंक लिस्ट? इट इज just a connection of the last node here with the first node.
So this forms a circle kind of a thing, circle, or you say, it comes back, arrives back, cycle, say. Okay, so cycle with the first node here, and then you can create doubly circular by having this and pointing the next to this, and so on. You can make changes according to the requirements. So these are the kinds of linked lists that particularly come in use. Okay, singly, double, and circular. Cool. um I don't think there is anything more that is required for now. Let's quickly look at this particular thing here. All right, this one, that what this means. It's written here, and we'll be using this. Hmm. Is it visible, or should I yeah, see what the this struct that is defined inside the lead code is doing. See, it's for the singly linked list, so this is particularly for this kind of a linked list. Okay, serial traversal in the straight direction. So what it says is, we have integer value. Okay, this is a integer value. We have we have this list node, this particular name here. Okay, and that points to next. So this is what next is. Okay, this is a pointer that points to the address of the next node, right? Next node. Now there are a few functions that is defined inside the structure. So if someone writes list node or calls this particular thing, so what it will do is, it will create a node with default value 0 and the next pointer that points to null. Okay, 0 and next pointer that points to null. And similarly, this value creates the value as x, next pointer equals to null. And when you also define the pointer that the next has to point, so you say you define the address of this particular thing, then this will start pointing to this, and that's simple as that. Okay, right? The value assign x and next assign next. So this is what LeetCode is currently defining the structure as. Now let's see the first problem that we have to consider for today. Just copy and paste it here. Okay. Given the head of a singly linked list, reverse the list and return the reversed list. What it says is, you are given the head of a singly linked list. The list is, you know, it is defined, but it is hidden inside the main section, which is not of interest to us. We just need to define this particular function. अभी अपने को क्या करना है कि इसको रिवर्स करना है. सो देयर कैन बी वन वे यू कैन थिंक कि हम किसी तरह अगर हेड को यहाँ पे लेके चले जाएं, ठीक है, और फिर इसको पीछे की तरफ पॉइंट करा दे, तो हम लोग रिवर्स कर पाएंगे. बट यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है कि हमारे को पीछे का एड्रेस ही नहीं पता. वी नो द एड्रेस ऑफ समथिंग दैट इज, लाइक, that's about to come, but we don't know what has passed by. You can't, from here you can't reach this point again, right? So you can't do something like you traverse head here and then you start going backwards. As we iterated in arrays, you can't do something like you reach here and then you go backwards, right? So that is not possible. So now what we can do here is, we can do is, let's say we initialize one pointer here, that's current points to this particular place. Okay, and we initialize one again, one more pointer that's say next, or +1, so plus anything that points to head का next. ठीक है, तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ गोइंग फ्रंट एंड कमिंग बैक, वो तो पॉसिबल नहीं है. तो हम क्या करेंगे कि इसका जो ये वाला पार्ट है ना, ये सारा एरोज, तो हम एरोज को रिवर्स करा सकते हैं. ठीक है, और लास्ट में क्या करेंगे, अभी तो फिलहाल ऐसे है,
लास्ट में क्या करेंगे, हेड यहाँ पे चला जाएगा, एरो रिवर्स होके ऐसा आ जाएगा, और ये सारा एरो रिवर्स हो जाएगा. ओके, सो आवर मोटिव इज to somehow bring head here. Let me change the color. Or you somehow bring the head here and point to this particular thing and reverse all the arrows and bring this thing, the last arrow to null pointer. Right? Right? This is the solution that we can provide. Now let's see how should we do this. We are assigning a current pointer that currently points to head. Okay. And then we are assigning a plus pointer that is pointing to हेड का नेक्स्ट. ओके, हेड्स नेक्स्ट, ये इनिशियली हेड के नेक्स्ट पे है. ठीक है, ऐसा है. अभी हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये जो जो प्लस का नेक्स्ट है ना, ये वाला पार्ट, लेट्स टेक राइट. सो व्हाट वी कैन डू इज, ये प्लस का नेक्स्ट को वी हैव टू ब्रिंग बैक एंड प्लेस इट हियर. तभी तो ये वाला पार्ट रिवर्स होगा, पहला वाला पॉइंट. नहीं, ये वाला, यहाँ पे नोड है, यहाँ पे नोड है. सो इसको हम उठा के यहाँ पे कर देंगे, तो ये यहाँ पे आ जाएगा. बट नाउ वी नीड टू टेक केयर कि अब तो हमें प्लस आगे बढ़ाना है ना, तो इफ यू रिमूव दिस एंड वी ब्रिंग इट बैक हियर, we have no way that we can make plus go ahead, right? So first what we are going to do is we are going to place plus here. तो इसका एक ही उपाय है कि हम प्लस को पहले ही यहाँ पे कर दे और करंट को यहाँ पे करें. ठीक है, और जो भी हमारा हेड पॉइंटर होगा, तो करंट का नेक्स्ट, the plus will actually, if you are getting this particular thing, we move it here, and this particular thing we move it here. ठीक है, अभी करंट के नेक्स्ट को we point to the previous वाला. ओके, एंड देन अभी फिर वापस से सेम कि प्लस के नेक्स्ट को यहाँ पे कर दो, उससे पहले प्लस को आगे कर देना, और प्लस को आगे करने के बाद जो भी ये करंट को भी आगे करने के बाद जो इसका नेक्स्ट होगा वो इसके प्रीवियस को पॉइंट करेगा, दिस पॉइंट. Once we code it, we'll get to get it better कि how things are moving. You just have to move these pointers आगे पीछे बस. ठीक है, ये जो, या फिर एक काम कर सकते हैं कि एक और प्रीवियस ले लेते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. वी हैव वन वर्क प्रीवियस. ठीक है, तो जब भी करेंट का नेक्स्ट को हम लोग प्रीवियस को पॉइंट करा देंगे, फिर प्लस को एक आगे करेंगे, मतलब प्लस फिलहाल यहाँ आ जाएगा, करेंट यहाँ पे आ जाएगा, प्रीवियस यहाँ आ जाएगा. नाउ करेंट का नेक्स्ट इज इक्वल्स टू प्रीवियस, and this way we move. And how long do we move? Until and unless this current points to null. मतलब ये करंट यहाँ पे आएगा तो इसको भी हमें मूव करना है, बट जब करंट यहाँ पे आ जाएगा ना, ये सी जब यहाँ आ जाएगा तब हमें रुक जाना है. बस इसी को एप्लीकेशन is what we need to do in lead code. So we need to initialize something like previous, then current, and then head, plus, right? So list node pointer previous. Let's initialize it to null pointer right now. ठीक है, फिर list, or rather instead of writing list node bar bar, you just define ln as list node. Now you can write ln pointer current, this make it to head. ठीक है, और ln का pointer next बोलो या previous बोलो, what you do is point currently to null pointer. Now what did I say, हमें move कब तक करना है, जब तक current इस null पे ना आ जाए. ठीक है, so while current is not equals to null pointer, or what you can do is just write current, right? वो null pointer पे आने पे खुद रुक जाएगा. So what are you gonna do is, see, पहले तो हम लोग जो ये नेक्स्ट है ना, नेक्स्ट को करंट का नेक्स्ट बनाते हैं. ठीक है, मतलब कि जब ये प्लस वाले को करंट का नेक्स्ट, राइट? सो नेक्स्ट इज इक्वल्स टू जो भी करंट है उसका नेक्स्ट. ये हो गया. ठीक है, तो अभी हमने ये तो कर दिया कि प्लस वन को इनिशियलाइज किया है. अभी क्या करना है, मूव करना है, राइट?
मतलब इसके आगे वाले को नेक्स्ट, नेक्स्ट के इस पॉइंट को वी नीड टू असाइन इट टू प्रीवियस। सो करंट के नेक्स्ट वाले को असाइन इट टू प्रीवियस, एंड देन मूव प्रीवियस के, प्रीवियस को आगे बढ़ाते हैं तो प्रीवियस इज इक्वल टू करंट, अब करंट को आगे बढ़ाते हैं तो करंट इज इक्वल्स टू नेक्स्ट। ठीक है, मतलब क्या कर रहे हैं देखो, कि वी आर इनिशियलाइजिंग नेक्स्ट, ट्राई एंड विजुअलाइज, वी आर इनिशियलाइजिंग नेक्स्ट एज करंट का नेक्स्ट। ठीक है, अभी नेक्स्ट यहाँ पे, नाउ करंट का नेक्स्ट जो था वो वाला पॉइंट, मतलब कि एक और हम लोग यहाँ पे वापस से लेते हैं सी। करंट जो कि अभी हेड पे था, हमने नेक्स्ट क्या इनिशियलाइज किया, करंट के नेक्स्ट को, तो यहाँ पे नेक्स्ट है। ठीक है, अभी व्हाट वी आर सेइंग इज कि ये वाला जो एरो था ना, इसको भी हटाना है, यहाँ से हटा के पीछे को डालना है। तो करंट का नेक्स्ट को वी ब्रिंग बैक टू प्रीवियस, और प्रीवियसली इनिशियली प्रीवियस इनिशियली इनिशियलाइज्ड था नल वैल्यू से, राइट। तो अभी देखो पहला इटरेशन में तो ये नल वैल्यू पे पॉइंट करेगा ही। सो करंट का नेक्स्ट इज प्रीवियस एंड वी हैव दिस नेक्स्ट। अभी क्या करें कि करंट को यहाँ पे कर देते हैं और नेक्स्ट को यहाँ पे कर देते हैं और प्रीवियस को यहाँ पे करते हैं। This is what is exactly happening here. When you do previous is equals to current, so this previous, now after this is done, you bring previous here, you do next, current is equals to next. So you bring current is equals to next. So current here, right? And when the while loop executes, you say next is equals to current का next. तो next is equals to current का next. ठीक है, ये अभी यहाँ पे है। इन द नेक्स्ट यू राइट कि करंट का नेक्स्ट इज प्रीवियस, करंट का जो, ये अभी अभी करंट जो यहाँ पे है उसका नेक्स्ट जो ये पॉइंट कर रहा था इसको हटाओ और इसको कहाँ पॉइंट कराओ, ये प्रीवियस के पे। ठीक है, तो इसको उठाकर हम पीछे डाल रहे हैं वापस से, समझ रहे हो, सारा एरोज रिवर्स होते जा रहा है और करंट आगे मूव करेगा वापस से यहाँ पे। ठीक है, एंड देन सिमिलरली यहाँ करंट का नेक्स्ट विल बी गिवन टू प्रीवियस, एंड नाउ व्हेन नेक्स्ट हियर, नेक्स्ट इज हियर विच इज नल. So now when current is equals to next is executed, now current also is equals to null, and hence the while loop execution stops. So now after this stops, what is here? Previous comes here, right? So what do we need to return? अभी क्या करेंगे कि देखो करंट का नेक्स्ट इक्वल्स टू प्रीवियस, मतलब जब करंट यहाँ पे आ रहा है तो करंट का प्रीवियस हम लोग यहाँ पे डाल चुके हैं, राइट। अभी ऐसा कुछ पॉइंट करेगा जो भी करंट वेक्टर है, और अदर करंट पॉइंटर है, वो इसको पॉइंट करेगा अभी। ठीक है, इसको, तो हमें रिटर्न क्या करना है, करंट रिटर्न करना है या प्रीवियस रिटर्न करना है, और रादर रादर करंट पॉइंट्स टू नल, बट प्रीवियस इज हियर, प्रीवियस इज नाउ हियर, दिस पॉइंट्स टू दिस थिंग। सो व्हाट डू वी रिटर्न, करंट और प्रीवियस? इफ यू रिटर्न करंट देन इट पॉइंट्स टू नल, सो देयर विल बी नथिंग रिटर्न। अगर हम लोग देखो यहाँ पे रिटर्न करंट कर देंगे तो कुछ रिटर्न नहीं आएगा। डिक्लेरेशन डज नॉट डिक्लेयर एनीथिंग। A type specifier is required for all declarations. Fine, let's write it here for now. Let's remove this. अभी इसके हिसाब से वो ब्लैंक ब्लैंक सारा आना चाहिए। See, what our output is empty, empty and empty, because अभी करंट नल को पॉइंट कर रहा है, बट जैसे हम लोग यहाँ पे प्रीवियस लिखेंगे, so now that is the new head, previous is the new head। ठीक है, वो जो हमें क्या रिटर्न करना है, that we have to return list node pointer, a pointer to list node, so that should contain address, and this previous is a pointer, right, list node pointer, so we are returning previous, that is now acting like head. If you run this, I hope this gets executed. Yeah,
This is the third, this is the first, second, and this is the first. Hmm. So what just we have to do is we need to just reverse all the uh, direction of all the arrows in order to get that. And let's copy and paste that code there. Can do it here only. अभी इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा कि ये सारा तो कांस्टेंट टाइम स्टिल इट टेक्स कांस्टेंट टाइम दीज थिंग्स are still taking constant time, but while current is not equals to null pointer, so now current starts from this particular place and traverses all the way up to null, right? So हमारा ये वाला कितना दूर तक चल चल रहा है, दैट इज जो भी अगर हमारा साइज है इस लिस्ट नोड का, इफ द साइज इज n, सो n प्लस वन टाइम्स ये वाला पर्टिकुलर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है, और rather इस पर्टिकुलर ब्लॉक को एग्जीक्यूशन n plus 1 times मिल रहा है, and these all takes order of one time. Okay, so overall if we see that what is the rate at which things are happening, or rather if we talk in terms of big O, then we take time complexity big O of n, right? This. So in this time complexity, we are solving this particular problem. What is the space complexity? We are not taking any space, extra spaces. So space complexity is order of 1, time complexity is order of n, right? This is how we are reversing a linked list. I hope you're getting how we had 3 pointers and we moved all these 3 pointers and kept on changing the the direction of arrows, right? Cool. So we are done with the first problem of the day. Now let's move on to the second problem, that is merging two sorted linked list. इसके बाद वाला जो problem है, this has a very interesting approach. So stay with me till the end and we'll see. Merge two sorted list. So you're given the heads of two sorted linked lists, list one and list two. Merge the two lists into one sorted list. ठीक है, ये हम लोगों ने टू पॉइंटर मेथड यूज करके भी किया है. अभी हमें क्या करना है, ये लिंक लिस्ट का ये यूज करके. तो यहाँ पे एक्चुअली टू पॉइंटर यहाँ पे भी यूज कर सकते हो, बट यहाँ पे और उससे बेटर बेटर अप्रोचेस है. ठीक है, तो अगर बोला जाए कि ये लिस्ट वन है हमारा और ये लिस्ट टू है, लास्ट में नल. तो देखो अभी हमें क्या करना है, सॉर्ट करना है. और व्हाट वी आर गिवन इज दिस पर्टिकुलर थिंग इज ऑलरेडी सॉर्टेड, दिस पर्टिकुलर थिंग इज आल्सो ऑलरेडी सॉर्टेड. ओके, for example, it's always better to take or assume some examples. Say it is 1 4 6 2 3, say 9. Okay, so what we can do is, we since we have to return one head of a particular linked list, यहाँ पे देखो, यहाँ पे we need to return a pointer to a list node. तो हम लेट्स से कि जो हमारा आंसर होगा ना, जो हमारा आंसर होगा वो मान लो कि ऐसा कुछ होगा. एक अभी एम्प्टी है, या फिर एक एक पर्टिकुलर नोड ले लेते हैं अभी के लिए, कि एक ही नोड है उसमें और ये अभी नल को पॉइंट कर रहा है, और ये नेक्स्ट बोल देते हैं, नेक्स्ट जो है वो भी इसको पॉइंट कर रहा है. ठीक है, तो अभी हम लोग को क्या करना होगा, इन दोनों के बीच कंपैरिजंस करने हैं, राइट? इफ यू कैन, व्हाई इज इट, इन दोनों के बीच कंपैरिजंस करना है, इन दोनों के बीच कंपैरिजंस करने हैं और इन दोनों के बीच कंपैरिजंस करने हैं. ठीक है, नहीं एक्चुअली इन दोनों के बीच नहीं, बता बता रहे, पहले पहले इन दोनों के बीच कंपैरिजंस होना है. सो क्या होगा कि वी विल चेक इफ L1 का वैल्यू इज लेस देन L2 का वैल्यू. इफ इट इज ट्रू, सो हमारा जो आंसर होगा ना उसमें पहले वन आना चाहिए. ठीक है, वो टू नहीं आना चाहिए, पहले वन आना चाहिए. सो ये वाला जो नल है इसको हमने हटाया और इसको यहाँ पे पॉइंट करा दिया. ठीक है, नाउ दिस इज डन. At the same time, what we need to do is we need to move this particular L1, which was the head here, to this point.
ठीक है, मतलब L1 is now equals to L1 का next. If this is next, L1 is now equals to L1 का next. ठीक है, सो अभी 1 तो हमने फिक्स कर दिया है. ठीक है, अभी वापस से हम क्या करेंगे, L1 के ये वाला पार्ट, L1 के वैल्यू को L2 के वैल्यू से कंपेयर करेंगे. ठीक है, सो इज 4 लेस देन 2? नो. सो व्हाट वी नीड टू डू इज, ये नेक्स्ट जो अभी यहाँ पे है, नेक्स्ट को हम वापस से आगे कर देते हैं. नेक्स्ट ये वाला पॉइंट है, नेक्स्ट का नेक्स्ट जो अभी के लिए 4 को पॉइंट कर रहा है, तो ये हम नेक्स्ट का नेक्स्ट को हम लोग को 2 पॉइंट कराना है. तो यहाँ पे नेक्स्ट का नेक्स्ट को हमने 2 को पॉइंट करा दिया. ठीक है, और ये वाला हटा दिया. तो अभी देखो हमारा लिस्ट कैसा बनते जा रहा है, ऐसा था पहले, उसके बाद हमारा ये 1 आया यहाँ पे, उसके बाद ये हमारा 2 आया यहाँ पे. ठीक है, और 2 के नेक्स्ट वाला भी 3 को कर ही रहा है. ठीक है, अभी L2 को भी मूव कराना है. ठीक है, L2 को आगे करा देते हैं ताकि हम लोग कंपेयर कर पाएंगे इजिली L1 के वैल्यू और L2 के वैल्यू पे. सो L1 वैल्यू एंड L2 वैल्यू विच इज स्मॉलर, L2's वैल्यू. सो इसका जो नेक्स्ट यहाँ पे था ना, इसका नेक्स्ट को हमेशा उसको पॉइंट कराना है जो छोटा रहेगा. ठीक है, तो अभी यहाँ पे हमारा 3 आके जुड़ गया. ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट हमारा ये वाला पॉइंट बन गया. ठीक है, और L2 को हमने क्या किया, इंक्रीमेंट करा के वहां पे डाला, मतलब ये वाला पर्टिकुलरली L2 को यहाँ पे किया. अभी तक 3 के बाद जो चेक करना है कि नेक्स्ट का नेक्स्ट, मतलब L1 का वैल्यू और L2 वैल्यू में कौन सा बड़ा है, तो 9 बड़ा है, तो हमने 4 को कंसिडर करना होगा. सो नेक्स्ट के नेक्स्ट को यहाँ से काट करके क्या करना है, 4 पे डाल दो. ठीक है, तो ऐसा कुछ बनेगा अभी 4. ठीक है, अभी हम इसको डालें और अभी यहाँ पे नल है, एक्चुअली ये नल है. ठीक है, अभी 4, और L1 को क्या किया, L1 को मूव कराया यहाँ पे. ठीक है, नाउ again we check 6 or 9, so we get 6, so we just remove this. No, actually what we keep this, क्योंकि अगर next यहाँ पे है, so next का next has to point to this particular value. ठीक है, so ये null को हटाएंगे इस बार, ये null will now change to 6, and so on. How long do we do this? Until and unless both the lists are empty. Mind not one but both. ठीक है, अगर ये बहुत आगे बहुत सारा होता और ये यहीं पे खत्म हो जाता, और लेट्स से यहाँ 10 11 12 ऐसा का कुछ है. ठीक है, नोड्स है यहाँ पे. So after 9 you will have to consider all the nodes, right? So that is how we are gonna let's see how are we gonna code it. ठीक है, इसका दो अप्रोचेस है. पहला वन इज iterative approach, the other one is the recursive approach also, so we'll look at both the approaches directly here. Okay, how are we going to do this? First of all, जो हमने बोला ये वाला बनाते हैं, एक नोड बनाते हैं यहाँ पे. ठीक है, list node pointer, give it a random name, say ram is equals to, and let's initialize it to 0, or you can't initialize it to anything, and that's completely fine. और उसके नेक्स्ट पॉइंट को अभी नेक्स्ट जो है ये वाले नेक्स्ट को अभी यहाँ पे पॉइंट कराना होगा ना. ये हमारा नोड बन गया, बट एक पॉइंटर लेना है जो इसको पर्टिकुलर पॉइंट करे. सो लिस्ट नोड पॉइंटर, नेक्स्ट नाम देने से अच्छा कुछ nxt लिखते हैं, या फिर हाँ nxt लिखते हैं. दिस शुड नाउ पॉइंट टू रैन, राइट, क्योंकि वो रैंडम को पॉइंट करना चाहिए अभी. ठीक है, अभी हमारा क्या होगा कि वाइल वाला लूप चालू होगा कि वाइल लिस्ट वन एग्जिस्ट, जो ये पर्टिकुलरली लिस्ट वन है ये एग्जिस्ट करे, और लिस्ट टू भी एग्जिस्ट करे. ठीक है, जब ये दोनों होगा तो कुछ करेंगे, और अगर एक कुछ खत्म हो जाता है, लेट्स से लिस्ट वन खत्म हो जाता है, सो आगे में हम लोग यहाँ पे ऐड लिस्ट वन इफ लिस्ट टू एम्प्टी, और लिस्ट टू ओवर, एंड एक और चीज होना चाहिए, ऐड लिस्ट टू इफ लिस्ट वन ओवर. ठीक है, दिस इज एग्जैक्टली हाउ वी यूज टू मर्ज थिंग्स इन वो मर्ज सॉर्ट. ओके, so while list 1 exists or list 2 exists, what are we gonna do is we need to compare things, right? So if list 1 का जो value है, value is less than list 2 के value, so there are some things, operation that we gonna do. The first one operation would be कि ये जो next है
इस नेक्स्ट के नेक्स्ट को पहले तो हमने लिस्ट वन को पॉइंट कराना है बिकॉज दैट इज अ स्मॉलर एलिमेंट, ठीक है। तो नेक्स्ट के नेक्स्ट को, और अगर नेक्स्ट को वी पॉइंट टू लिस्ट वन, ठीक है। ये पहला काम किया। और जहां अगर याद होगा, इसको पॉइंट करने के बाद हमने लिस्ट वन को मूव भी कर रखा है बिकॉज यू नीड टू कंपेयर इट द नेक्स्ट टाइम। सो व्हाट आर यू गोना डू इज लिस्ट वन इज इक्वल्स टू लिस्ट वन का नेक्स्ट, ठीक है। This is how we are pointing this particular thing is how we are like accessing the pointer, right, in C++ and C, this arrow. Okay, fine. So we did this. Or if this is not the case, then we have an else statement where we say that भैया next को जो है we point to next, next of next, we point to list 2 now, and list 2 will now become list 2 of next, ठीक है। ये हो रहा है, ये तब तक होगा जब तक वो दोनों एग्जिस्ट करता है। अभी क्या है कि list 1 is if list 2 is over, so if not list 2, or rather you can write if list 1 still exists, तो मान लो कि अभी क्या है कि हमारा नेक्स्ट यहाँ पे नल को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। ये नेक्स्ट है, नेक्स्ट के नेक्स्ट को नल को पॉइंट कर रहा है। हमें क्या करना है, यहाँ पे कुछ 10 11 12 ऐसा कुछ कुछ है। सो यहाँ पे तो कुछ नहीं है। तो कैन वी डू वन थिंग इज दैट वी कैन डायरेक्टली से कि नेक्स्ट के नेक्स्ट को हम लोग 10 को पॉइंट करा देते हैं, उसके आगे का तो ये ऑटोमेटिकली पॉइंट कर ही रहा है। आई मीन अगर एक लिंक्ड लिस्ट है तो 10 is automatically pointing to 11, 11 is automatically pointing to 12. So what are we just required to do is that put next of next to this particular thing, that is link list 1. So next, rather nxt from next is equals to list 1. Okay, and in this case if list 2 exists, so nxt next is equals to list. Fine. Now what are you gonna return? We are gonna return this particular random function जो था, random node था उसका next, ठीक है। अभी random खुद एक node है, वो एक pointer नहीं है। So we have to return ran.nxt dot. We are accessing it using dot because ran is not a pointer. If you see here, rather this should be the thing. Ran is not a pointer, and hence ran dot next is used to access this point, this next. Okay, एक बार ही चेक करते हैं। इनिशियलाइज किया एक रैंडम डमी वेरिएबल, फिर नेक्स्ट को असाइन किया जो उस रैन को पॉइंट करे, और until these exists we are comparing and moving the pointer next and making a chain, it's like making a chain. And if one of the two lists is still remaining, we just point the next to that particular list which is remaining, right? Let's try and run this code. No viable conversion from list node to list node pointer. Oh, we have to assign the address of that. Or does it say a no member? Oh, next. Okay, let's see. We are failing one test case here. Oh, output is just 4. That's fine. These things are fine. Only this is where I think there is a problem. List node pointer next is pointing to that particular pointer.
while list 1 and list 2, if list 1 val is less than list 2 val, next is in list 1. That is fine. List 1 is in list 1. Next of next and list 2. Uh, 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 um, okay, we need to return the head of this thing. And there is a problem here, I guess. Ran dot uh next. This won't work, of course. Mm, It's just having 4 inside. Why not 1 1? Oh. Is it because NXT next will now point to 1 and this moves. Mm-mm-mm. I guess I'm missing something here. It only has 4 inside. Well, I guess there is some issue. We'll look at this. We'll now just move on to the recursive wala code and then come back here. There is some problem. I think this particular approach is right. From here to here, it's right, I guess. List 1, list 2. This particular thing is right. No, do one thing. Just say key. I guess we are just having one silly mistake somewhere. I can't catch it. If you guys can see it, just mention it in the comments. You can do one thing and just put it here. There's just one simple error which I think we can't see. रैंडम का नेक्स्ट ही तो रिटर्न करेंगे ना. Let's see. While inside the while loop, you never move the pointer next. Oh. We need to move next also, right?
here we have to have next is equals to next to the next. Now it should work. Fine. आगे आखिर हम लोग को ये नेक्स्ट भी तो आगे ये बढ़ाते रहना है ना. हम क्या कर रहे थे लास्ट टाइम, नेक्स्ट मूव ही नहीं कर रहे थे, सो इट वाज जस्ट नो टेकिंग जस्ट वन सिंगल इनपुट. फाइन. So okay, so this is one way of doing this. This is the thing which was missing. Okay, good. Just put it there. So this is a iterative approach. मतलब कि हम लोग traverse कर रहे हैं. So that's why it's an iterative approach. Now we'll see the recursive approach. वो वाला क्या है कि एक बार ही समझ गए तो समझने में बहुत लाइक कोड करने में इजी होगा. ठीक है, इतना लंबा अपने को नहीं जाना है. और इसका अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखें, सो वी आर जस्ट क्रिएटिंग वन नोड एक्स्ट्रा, और फिर हम सारे मूव करते जा रहे हैं. अगर इसका साइज, ये पर्टिकुलर वाले का साइज n है, if this is n and this is m, so the time complexity overall is order of n plus m. ठीक है. Space complexity is order of 1 because we are not using any, you know, any list or different list. ये वाला जो हम लोग एक लिस्ट की लिखे हैं, ये तो बस समझने को लिखे हैं. एक्चुअल में जो पॉइंटर्स मूव हो रहा है वो इन्हीं दो लिस्ट्स को कनेक्ट कर करके हो रहा है. ठीक है, तो हम लोग कुछ नया यूज नहीं कर रहे. दैट इज व्हाई वी हैव एन ऑर्डर वन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी. ओके, सो दिस इज एन इटरेटिव वर्जन. यहाँ मेंशन कर देता हूँ इटरेटिव. नाउ लेट्स लुक ऑन टू द रिकर्सिव वर्जन ऑफ द कोड. सो व्हाट रिकर्सिव वर्जन ऑफ द कोड सेज, पहले कि अगर हमारा लिस्ट वन का जो वैल्यू है वो छोटा है लिस्ट टू के वैल्यू से, तो हम वापस से मर्ज वाले फंक्शन को कॉल करेंगे. एंड नाउ दिस टाइम देखो, अगर यहाँ पे देखोगे, सो वी हैव लिस्ट वन और लिस्ट टू का हेड. ठीक है, ओके, लिस्ट वन और लिस्ट टू का हेड है. तो जब ये वाला चीज आएगा ना, तो हम लोग लिस्ट वन की जगह क्या कर सकते हैं, जो वहाँ लिस्ट वन भेज रहा था वहाँ लिस्ट वन का नेक्स्ट भेज सकते हैं. ठीक है, उसके बाद वाला, और उसके अकॉर्डिंग मर्ज करा कर सकते हैं. वी राइट लिस्ट वन इज इक्वल्स टू मर्ज लिस्ट वन नेक्स्ट एंड देन लिस्ट टू. ठीक है, और यू रिटर्न लिस्ट वन. अभी अगर लिस्ट टू बड़ा है, मतलब लिस्ट टू का अगर वैल्यू छोटा है, सो यू डू लिस्ट टू इज इक्वल्स टू अगेन द सेम फंक्शन मर्ज. अभी लिस्ट वन सेम रहेगा और लिस्ट टू का नेक्स्ट. We recursively calling that particular function only, but we are changing these things here. That okay, list two is fine. What we need to do is, I mean sorry, the list one का वैल्यू इज फाइन. नाउ व्हाट वी नीड टू कंसिडर इज लिस्ट वन के बाद से वैल्यू. ठीक है, उसके बाद का कंसिडर करो. लिस्ट वन को हम, ठीक है, वो बता दिया कि वो छोटा है. और इस केस में क्या बोल रहा है कि लिस्ट टू का जो वैल्यू है ना, दैट इज फिक्स्ड, दैट इज फाइन. नाउ व्हाट वी नीड टू मर्ज इज लिस्ट टू के बाद वाले एलिमेंट्स. ठीक है, और रिटर्न लिस्ट टू. अभी इसका बेस केस भी होगा, तब समझ में आएगा. लिस्ट टू, अभी बेस केस क्या होगा, इफ देर इज नथिंग इन लिस्ट वन, then what do you return, list 2. Or if there is nothing in list 2, then what you return is list 1. ठीक है, तो ये भी उसी तरह से है, बस कि हम क्या चेक कर रहे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी चेक इन दोनों में से कौन बड़ा है, कौन छोटा है एक्चुअली. सो वन छोटा है. हुँ? इसका रिकर्शन ट्री बना ले क्या, रुको कोड करते हैं फिर बनाते हैं. इसको रीसेट करते हैं. डिस्क्रिप्शन पे so what are we saying, we first have a base condition that if there is no list 1, then we return list 2, and if there is no list 2, then we return list 1. ठीक है, और अभी वो केसेस आएगा कि if list 1 value is less than list 2,
can do is return list one, but before that we need to write that list one is equals to this function merge to lists, and here we write list one का next, ठीक है। और लिस्ट टू तो जैसे है वैसे ही रहेगा, क्योंकि उसको अभी आगे का मर्ज में कंसिडर करना है, ठीक है। else list 2 is equals to merge, rather I've copied it, so let's just paste। अभी यहाँ देखो लिस्ट टू को चेंज करना है यहाँ पे, और मर्ज क्या कर रहे हैं, लिस्ट वन एज इट इज रहेगा और लिस्ट टू की जगह लिस्ट टू का नेक्स्ट, ठीक है। रिटर्न लिस्ट टू एंड वी आर डन आई गेस, ओके। इसको अगर रन करते हैं, आ वैल्यू, okay, we are getting the same problem again. Why so? If not list one, then we return that. If not this, then we return that. अभी हम लोग क्या कंसिडर नहीं कर रहे, लिस्ट वन लिस्ट टू का नेक्स्ट, सेम प्रॉब्लम क्यों हो रहा है बार बार। दिस इज फाइन, लिस्ट वन। एक बार इसको हम लोग ना ये ट्राई रन करके देखते हैं, रुको एक सेकंड, तब समझ में आ जाएगा। मान लो कि यहाँ पे वन फोर है और यहाँ पे टू फाइव है, L1 L2, we ask whether this is smaller than this, yes, then we say कि list one assign list one का next assign, yes। एक मिनट इसका ट्राई रन हम लोग करते हैं, बट लेट्स सी इफ दिस वर्क्स, दिस शुड वर्क। लिस्ट वन का नेक्स्ट को असाइन करना है, ये रुको यहाँ से कॉपी करते हैं फिर वहां पे देखते हैं। We'll run it in new page। See, when we have 1 4 2 and 5, how this tree looks like, see, first of all we check this particular condition if list, because these two are of course false, so if list 1 ka value is less than list 2 values, which is true in this case, right, 1 is less than 2, so list 1 next, so what does it say is कि L1 का next, this something like this, ठीक है। तो 1, ये तो वी आर इंक्लूडिंग कि दिस हैपन, सो इसके बाद का चीजें चेंज करो, इसके पहले का कुछ चेंज नहीं करना है। सो लिस्ट वन डॉट नेक्स्ट, और रादर लिस्ट वन का नेक्स्ट इज merge two sorted lists, list one next and list two, so now what we are providing as the uh, parameters is just 4 2 and 5, okay, and now list one points to here according to this list one dot next, right, so this points to 4, ठीक है। तो अभी इस पे वापस से एक कॉल हो गया, ये वाला फंक्शन मर्ज 4 2 5 के साथ, ठीक है, और ये वन हमारे पास है ही। तो अभी ये मर्ज 4 2 5 कैसे काम करेगा, इट विल चेक whether list 1 का वैल्यू 4 is less than list 2 values, no, 4 is not less than 2, this particular thing, right, 4 is not less than 2, so list 2 next, list 2 का next, and then you write merge two lists,
list one. So what do you say is this is list one का next. ओके okay. और इस पर्टिकुलर केस के लिए हम लोग लिखते हैं कि लिस्ट टू का नेक्स्ट, मतलब ये जो टू का नेक्स्ट ये वाला पॉइंट, ठीक है, इसको वी राइट लिस्ट वन, मतलब ये फोर, अब ये आगे जाके इसको पॉइंट कर रहा है, और उसके साथ हम लोग ये नेक्स्ट पैरामीटर क्या पास करें, रुको, मर्ज लिस्ट वन एज इट इज, और अभी फाइव बस, ठीक है, वेल एंड गुड. नाउ व्हाट दिस डज इज यू चेक फोर एंड फाइव के बीच में, फोर छोटा है, सो हमारे पास क्या होगा, लिस्ट वन का नेक्स्ट, फोर के नेक्स्ट को यू यू से लिस्ट मर्ज टू लिस्ट लिस्ट वन के नेक्स्ट, लिस्ट वन का अब नेक्स्ट क्या है, नल, ठीक है, मतलब यहाँ पे एक और फंक्शन कॉल हो रहा है, मर्ज नल, और यहाँ पे फाइव लिख के, अभी देखो यहाँ पे मर्ज जब नल आ रहा है तो ये नॉट लिस्ट वन ट्रू हो जा रहा है, ठीक है, तो रिटर्न लिस्ट टू. अब लिस्ट टू में क्या है, इसके बाद सिर्फ फाइव है ना, और ये नल. तो अगर तुम एक चेन फॉर्म करके इसको देखो, तो इट गोज लाइक वन, now this points to 2, this points to 4, and this points to 5. So this is how uh, the chaining works. It's like this, and this is what the linked list you are creating, that's 1 2 4 and 5, which is sorted. Okay, this is how the recursive function looks like, क्योंकि तुम बार बार इसको रिकर्सिवली कॉल कर रहे हो, ठीक है, जब तक कि नल ना होता है और वो बेस कंडीशन में बीट नहीं करता. तो ये एक चीज है. इसका भी अगर हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखें, तो ये कितना बारी होगा, जितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ना, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अगर देखें, तो एवरी टाइम वी आर यूजिंग दीज एज अ पैरामीटर, राइट. तो हम लोग हर बार वो सेम लिस्ट को बार बार को भेज रहे हैं, तो इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी सेम होगा, मतलब ऑर्डर ऑफ n प्लस एन, बिकॉज वी आर नॉट वर्किंग विद अ सिंगल लिस्ट. For this particular problem, this is our list. For this particular problem, these are our lists. For this, these are our lists. So अगर तुम देखो, तो जितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उतना बारी एक एक तो हटते जाएगा और बाकी सब पास ऑन होते जाएगा, ठीक है, इसमें वन हटा बाकी फोर टू फाइव पास हुआ, टू हटा फोर फाइव पास हुआ, एंड सो ऑन. सो द टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑल्सो इज ऑर्डर ऑफ n प्लस n. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट. कितना टाइम है, थोड़ा ही टाइम है. ओके, ये वाला हो जाएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, सो आई वांट टू कवर दिस. ओके, it asks you whether or not the cycle is present in the linked list. If you have been with us in the previous lectures, you will very well be acquainted with the concepts of set, which we are going to use here. And since I have already told we are going to use set, I hope you know why. It basically it tells you कि अगर हमने कुछ ट्रैवर्स कर लिया ना, तो उसका नेक्स्ट वाला वहां पे ही नहीं आना चाहिए. 3 2 0 -4, इसका नेक्स्ट जो है ये टू को पॉइंट कर दे रहा है, तो टू तो हमने ऑलरेडी ट्रैवर्स कर चुका, तो वापस टू पे आ रहा है, दैट मीन्स द साइकिल एग्जिस्ट्स हियर, राइट. Even this is a cycle, that 1 2 3, and after this you come back to 2, or after this you come back to 1, or after this, with whatever this the things are here, you come back to that particular thing. So that is where a cycle is existing, right? And whenever a cycle exists, we need to return true. Okay, so see, one thing is कि हम लोग एक सेट बना लेते हैं उसी लिस्ट नोड का, ठीक है, सारा नोड्स को हमने सेट पे कंसिडर किया. अब अगर उस मतलब अगर उस पर्टिकुलर, मान लो ये सीन करके एक नाम दे देते, ठीक है, सेट. तो अभी वन तो यहाँ रिकॉर्ड हो गया, यहाँ पे टू भी रिकॉर्ड हो गया, यहाँ पे थ्री भी यहाँ रिकॉर्ड हो गया, बट एज यू से कि थ्री का नेक्स्ट इज टू, विच इज द सेम टू दैट वी हैव. सेम टू मतलब अलग टू भी हो सकता है, कि अगर इसका टू का अगर जो नेक्स्ट वाला पॉइंटर है ना, ये फोर को पॉइंट कर जाए, तो ये और ये टू सेम नहीं है. This two and this two is same only when the next of this two points to three only. मतलब समझ रहे हो, तभी ये टू और ये टू सेम होगा. इसका टू अगर नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है फोर को, तो ये डिफरेंट नोड ही कंसिडर होता है, एक पर्टिकुलर नोड, तो कुछ तो अलग है ना, नेक्स्ट पॉइंटर अलग है, सो पूरा नोड ही अलग हो जाएगा. सो
वी विल चेक दैट वेदर दिस टू वॉज प्रेजेंट और नॉट, जिसका नोड 2 था और यहाँ पे जो एड्रेस था, एड्रेस which was pointing to this particular thing, यही सेम होना चाहिए. That means we have already visited that particular node and hence that forms a cycle. Cool. How do we implement it? We are just having one unordered set and set of what? Set of low nodes, right? And we name it scene. ठीक है. और अभी हमने को क्या करना है? ट्रैवर्स करना है हर बार को, मतलब इस हेड वाले पॉइंट होगा ना, यहाँ पे कुछ ऐसा, यहाँ पे कुछ हेड होगा जो इसको पॉइंट कर रहा होगा. ठीक है. तो अगर हम लोग एक लिस्ट नोड पॉइंटर करंट को पॉइंट कर देते हैं हेड पे, और while current, this automatically means while current is not equals to null pointer, what do you need to do? If you need to now check scene dot find, if you remember, scene dot find, now find what? Find that particular node which is there in the current वाला thing. ये अगर ये हमने पहले देख रखा है, मतलब कि इसका जो है वो नॉट इक्वल टू सीन डॉट एंड आएगा, मतलब ये खोजते खोजते एंड में नहीं जा रहा है. अगर ऐसा है तो सिंपली रिटर्न ट्रू, और अगर ऐसा नहीं है तो हमने उसको इंसर्ट करना होगा. तो सीन डॉट इंसर्ट करेंट, अभी इंसर्ट कर लिया, अभी करंट को आगे बढ़ाना है. सो करंट इज इक्वल्स टू करंट का, ठीक है, और एट द एंड वी आर रिटर्निंग फॉल्स. यही होना चाहिए. अब क्या दिक्कत है? अनऑर्डर्ड, ओह ये अभी तो हमने सेट बना के चेक किया है. लेट्स सी इफ दिस गेट एक्सेप्टेड फर्स्ट, वरना यहाँ पे भी दिक्कत आ जाता है. हाँ ठीक है. ठीक है, ये तो सेट बना के है. अभी एक और इसका अप्रोच है जो जो पर्टिकुलरली बहुत अच्छा है. इवन इफ यू थिंक दैट इज, इवन इफ यू आर एबल टू थिंक दैट पर्टिकुलर अप्रोच, दैट्स वेरी गुड. ठीक है. इसको बोलता है फास्ट एंड स्लो मूविंग. ओके, व्हाट डू यू कॉल इट? इट्स कॉल्ड फास्ट एंड स्लो मूविंग पॉइंटर्स. This is what I liked about this problem, this particular approach. Okay, fast and slow moving pointer. इसमें तुम क्या कर रहे होते हैं कि हमारा जो एक लिस्ट है, ऐसा कुछ है, और अगर ये वाला पॉइंट से यहाँ पे फिक्स है, मतलब कि साइकिल एग्जिस्ट कर रहा है. ठीक है, इट हैज साइकिल्स. सो सी, लेट मी राइट द कोड एंड देन यू विल अंडरस्टैंड. पहले तो हम लोग वो लिस्ट नोड पॉइंटर एक असाइन करते हैं फास्ट, इसको अभी हेड पे रखते हैं. ठीक है, हेड पे. और एक स्लो पॉइंटर बोलते हैं, उसको भी हेड पे ही रखते हैं. हम्म. अभी हम लोग क्या करेंगे, जो फास्ट वाला पॉइंटर है ना वो बहुत फास्ट आगे जाएगा. ठीक है, और जो स्लो वाला पॉइंटर है वो धीरे धीरे आगे जाएगा. और यू जस्ट ट्राई टू विजुअलाइज दिस अप्रोच इज वेरी गुड. कि वाइल, ये वाइल लूप तो अभी रहने दो, बस लिख रहे हैं अभी. वाइल फास्ट इज नॉट इक्वल्स टू नल, फास्ट का नेक्स्ट इज नॉट इक्वल्स टू. देखो अभी क्या है कि फास्ट इज इक्वल्स टू फास्ट का नेक्स्ट और उसका भी एक नेक्स्ट. मतलब ये तुम दो दो बार करके आगे बढ़ा रहे हो. मतलब पहला इटरेशन में क्या होगा, फास्ट इज इक्वल्स टू दिस एंड दिस, मतलब ये एक साथ दो कवर करेगा वो बहुत फास्टली. समझ रहे हो? और स्लो को हम क्या कराएंगे, विल राइट दैट स्लो इज इक्वल्स टू स्लो डॉट नेक्स्ट, बस. और ये क्या कर रहा है, ये एक एक करके आगे जा रहा है. तो अभी ये एक आगे गया लेकिन फास्ट हमारे यहाँ पहुंच चुका है.
ठीक है, स्लो यहाँ पे है। और अभी हम लोग चेक करेंगे फास्ट इज इक्वल्स टू स्लो, कि अगर फास्ट स्लो के बराबर है, इफ यस देन यू रिटर्न ट्रू। ठीक है, और अगर नहीं है तो ऑफ कोर्स यू विल रिटर्न फॉल्स। सॉरी सॉरी, दिस शुड रिटर्न ट्रू, और वही आफ्टर लूप यू रिटर्न फॉल्स। मैं समझ रहा हूँ, फास्ट जो है वो आगे जाके चेक करते जा रहा है जल्दी जल्दी, कि जो पीछे का स्लो आ रहा है उससे मैच तो नहीं करता। समझ रहे हो? और ये वाला बहुत स्पीड आगे जाते जा रहा है, दो दो का जंप लेके, पहला बार में यहाँ गया, दूसरा बार में दो दो पॉइंट्स आगे जाएगा। ठीक है, और स्लो विल अगेन लाइक आफ्टर द सेकंड इटरेशन इट विल रीच हियर ओनली, and you will check if fast is equals to slow, then you return true, or else you return false. If you try to visualize it, you will get to know कि फास्ट क्या कर रहा है ना, वो फास्ट बहुत जल्दी जल्दी आगे जाकर चेक कर रहा है कि हमारा जो पीछे स्लो आ रहा है उससे इक्वल है कि नहीं। दिस विल पॉइंट टू हेड। While fast is not equals to null, null नहीं एक्चुअली null पॉइंटर लिखते हैं, एंड फास्ट का नेक्स्ट इज नॉट इक्वल्स टू, फास्ट का डबल जंप लेते हैं, फास्ट इक्वल्स टू फास्ट का नेक्स्ट का नेक्स्ट, और स्लो को लिखते हैं कि स्लो का, if fast slow, say that's this, see यहाँ पे देखो, पहला पहला इटरेशन में क्या होगा, फास्ट इज हेड और स्लो भी यहीं पे है। ठीक है, फास्ट इज इक्वल्स टू फास्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, so next and the next, and slow is equals to slow dot next next. Is it equals to is are they both equal? No, so it will again move. So now fast is equals to next next, and slow is equals to slow ka next. So now it will check whether it's equal to 2, I mean whether fast is equals to slow, मतलब इसका next और इसका भी next is this, और इसका next is this. Okay, so this will return true, मतलब हाँ इसका next जो है वो यही है। समझ रहे हो, ये दो दो बार आगे आगे जाकर पीछे वाले को चेक करते जाता है। इन दिस केस तो मतलब तुम समझ ही सकते हो, फास्ट का नेक्स्ट और इसका नेक्स्ट इज इक्वल्स टू यही वाला पॉइंट, दिस पर्टिकुलर पॉइंट वेयर जहाँ पे दोनों हेड पे है। और ये तो सिंपल एक ही है, तो फास्ट नेक्स्ट 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 जो भी होगा वो नल पे ही जाएगा, यहाँ पे कोई साइकिल एग्जिस्ट नहीं करता, यहाँ पे करता है ऑफ कोर्स। सो इफ यू विजुअलाइज इट इन दिस पर्टिकुलर वे, जहाँ पे तुम एक एरो 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 लेकर चेक करो, so you'll be able to see कि how do we move the arrows as well as how do we um, iterate through the particular linked list. लिंक लिस्ट में इटरेट करना ही एक मेन चैलेंज बोल सकते हो। और यूजिंग दिस, ऐसा कुछ नेक्स्ट 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 यूज करके, और ऐसा कुछ एक चेकर हमेशा लगेगा ताकि तुम लिंक लिस्ट जहाँ पे एंड हो रहा है उससे बाहर ना निकल जाओ। ओके, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं। अगर नेक्स्ट नेक्स्ट देखो, स्लो ऑफ नेक्स्ट जो है, अगर साइकिल नहीं भी एग्जिस्ट करेगा तो ये एक एक करके तो सारा पे जाएगा ही, ऐसे ऐसे सारा
इसको तो ट्रैवर्स करेगा ही ना. Right. So this will be order of n. I guess it's order of n only, I guess. Okay. फास्ट तो ठीक है, वो दो बार को चले, बट जो रेट है, मतलब जो स्लोएस्ट पार्ट है वो ये वाला है. Okay, then I guess we'll be ending this class for today. Right. We'll meet you in the next class, and these all will be shared in the Google Drive, which is here in the description of the video. I can check it here. और वो नोशन पे जो भी डिस्क्रिप्शन पे देखना, नोशन का भी लिंक है, वो कम्युनिटी का भी लिंक है, एंड एवरीथिंग इज देयर. ठीक है. ओके देन, सी या, बाय बाय, शुभ रात्रि.